Hello everyone, once again. It's 10, so it's not actually good evening. It's near to good night, so never mind. I'm Amrit Anshudas. So अगर रात को मीटिंग हो रहा है तो कैसे बोलना चाहिए? Good night everyone. My name is No, Amrit Anshu. it's better to say good evening because yeah, it's better to say good evening because I Not good prefer. night. No, it's not good night until Okay. until at the end of the meeting. Yeah. Okay, please. I'm Amrit Anshudas. I belong to Odisha. I'm from Kalinga Institute of Industrial Technology, pursuing computer science engineering. I'm a second year undergraduate. That's it. Okay, thank you. Ayush. Hi, good evening, everyone. I'm Anish Kumar, born in Bihar, brought up in Jamshedpur, Jharkhand. Currently pursuing BCom in Business Analytics at District College. Ayush, your mic is, I think, somehow not. Voice is not coming very well. Now it is okay. Now better. Yeah. So good evening, everyone. I'm Ayush Kumar, born in Bihar, brought up in Jamshedpur, Jharkhand. Currently, I'm pursuing BCom in Business Analytics from District College, Bangalore. And along with that, I'm also pursuing my CA degree. I'm in foundation level. Apart from that, I'm currently working with one of the startups known as ProTrainee as a operations lead there. And yeah, that's it. Okay, thank you. Samarpita. Yeah. Hello everyone. This is Samarpita Saha. I'm currently pursuing my BTech in Computer Science Engineering from KT University Bhubaneswar, and I'm from Kolkata. Yeah, that's it. Thank you. Mavika. Hello everyone. My name is Bharata Ashmi Verma, a rising junior at Motilal Nehru Public School, Jamshedpur. I was born in Jamshedpur and brought up in Bihar and Gujarat, and then I'm back in Jamshedpur again. So that's it about me. Okay, Chavi. Hi everyone, I'm Chavi and I'm a first year student of CUE branch from Thapa Institute of Engineering College. Okay, Hariji. You're muted. Yeah, sorry. Good evening, Vishal. Yeah, good evening, everyone. I'm Hari Kuti. Currently, I'm in Mumbai and I'm working on my own startup, which is into analytical and laboratory equipments. And I am having around 9 years of experience into B2B sales. I'm an instrumentation engineer and a PGDM in marketing and HR from Wellinkers. Okay. Srishti, is your mic connected? Yeah, now it's connected. Are you there? Never mind. Okay. So today's meeting it's more of a informal meeting because so many things are happening around us. So I thought it's good to call a meeting and just see how everyone is doing in terms of their personal life and the media life, etc. So let's start from Ritanshu. So Ritanshu, इतना सारा नेगेटिविटी है, डेथ न्यूज है, इस बीच तुम मुस्कुरा कैसे रहे हो? थोड़ा एक्सप्लेन करो. हिंदी में बोलूंगा सर. To your wish. अभी this is not an interview. It's more of a sorrow sharing, happiness sharing meeting. Okay. Fine. My opinions won't be judged. That's It might be judged, but you can ignore the judgment. Okay. I won't. Thank you. So why am I smiling? It's completely. No, I'm just asking not why you are smiling. Okay. How are you maintaining your smile? Let's say not just in this meeting. In general, let me tell you why and how I maintain my sanity in the COVID times, right? So I'm completely out of Instagram and stuff. I get involved myself. I try to get myself involved into books,
specifically in physical books, not in ebooks, because that keeps your mind out of everything. Okay, so apart from that, I mostly do content writing, right? I think about stuff. Apart from that, I stargaze in the sense that I'm a bit more interested into space technology. So I just move into be it blogs or be it some articles. So I quite less get distracted regarding this COVID, unless until I get some news or there is some requirement for any kind of stuff like beds or oxygen cylinders. Then I have to go out for a search. Okay. Apart from that, I'm currently engaged in just building a website. Actually, I have means we are in a team. We are building a COVID website for helping people. Like you must have seen the Twitter extractor, right? There are some posts in Twitter. Now people post about the availability of certain things. So what we would do, we would make it more centralized. So that's what I'm presently working on. Apart from that, I keep myself away from news. You're keeping yourself busy and not Yes. really following, let's say, media and social media. Yeah, that's actually not the central point. What I would say the central point is I'm a bit more aligned towards spirituality lately. So I just try to keep myself Okay, okay. Chavi, what's your daily sanity maintenance? I was just a second, sir. Yeah, sure. I was extremely busy from past 2 weeks. Actually, I was not well from past 2 weeks, and I was having a viral. And now my parents are having a mild fever. So I'm just managing the whole house. Now I am well. You had fever last 2 weeks? So are you scared कि कहीं अंत ना हो जाए? I isolated myself from everyone. I was just sitting alone from past a week, and now after so much time, I've just met everyone yesterday. Okay. So in your own house, you are pretty much isolated. But did you do a test also, or just you're positive? No, sir, it was negative, but then also I tried isolating myself कि किसी और को fever ना हो जाए. Fever ना हो जाए फिर that might hamper them. Yeah, you are muted. Chavi, you are muted. Now my parents are having fever, so they are isolated. So it's just everything is going so easy. And so how many people are in your house? So 5. Oh, okay. So your own family mainly. Okay. So I want to ask you something. Yes. सर एक्चुअली मैंने ना मतलब NIT के सूरतकल को टैग किया था एंड मैंने उनको डिलीवरेबल्स जो भी थे उनको सेंड कर दिए थे एंड रिसेंटली शायद कल रात सृष्टि ने उनको ईमेल डाला होगा एंड उसमें लिखा था कि 50% I guess 50% would be provided on all LWT courses, and I have not mentioned it in my deliverables. So they are asking it for that. And which one is correct? So ठीक है, इसको अलग से देखेंगे. अभी I think not the agenda of today. ठीक है. Okay. Ayush, what's your situation like? घर पे आसपास? So sir, like currently I'm living in Bangalore only. I have not gone to my hometown because one of my maternal uncle is already like going with that situation, fever and all stuff. So like my parents suggested me to better to stay in my. Currently I'm living in my PG. So in our area of the Bangalore, like there are no cases till now. But Bangalore is totally affected, as everyone knows. But in our area, like this is a student area, so nearby only PGs and hostels are there. So like this area is not affected. Yeah, outside there are like no people are there, only mess and all is open. So mostly my morning time is like I start my day with my classes from 9 to 4:30. My classes goes on. In between I get 1 hour, so just I go out to take the food with a proper like wearing 2 masks and with sanitizer and stuff. So just going out there and I eat my lunch, and after that again in evening I went out for like 5 minutes to take my food only. So this is the 2 time I go out.
Rest of my day I spent on my table, chair, and bed. That's it. So yeah, we call about like sanitizer and all is always around us. So yeah, I'm taking care of it. Yeah, so this is the situation currently. Sure. Bhavika, what's your surroundings and locality? Most of my neighbors have tested positive, but my family recently recovered, so it's good in that aspect. But I have been watching a lot of pet videos lately. Like there's a movie called The Secret Lives of Pets, and there's a character in there called Snowball, and he's extremely hilarious. And there's a video of him singing a song. So I watch that on repeat most of the day, and then I'm reading Tempest these days for school, and I'm actually juggling between a lot of books. Like I recently started Persuasion by Jane Austen, and then I'm learning Russian. So a lot of my time goes there as well. And about academics, it's physics these days. I have stopped touching maths at all, and I'm writing a book of my own. So I try to give it 20 to 30 minutes every single day. It's So not your parents recovered, right? You said. No, actually, my grandparents were positive, and one of my uncles. So same house or different house? Same house. Okay. So now everyone is okay? Yeah, almost. Like my uncle is almost recovered, and my grandparents are recovered now. Okay. Samarpita? Okay, so what I do is I keep myself busy and I spend a lot of time with my father. And thankfully, till now, nobody is positive in my family, touch wood. And but yesterday, one of my very close friend lost her father, so she was really disturbed. First time I listened her crying, so it was very disturbing. But then, if I'm busy, then I'm not thinking about those things. But night is a time when I can't sleep and my mind is empty. And that time, I was only thinking about her. So that was very, very disturbing. But apart from that, I think the solution is to keep yourself busy. Sure. Okay. हरी जी, आपका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है अभी? So मेरा भी कुछ सिमिलर ही है एक्सपीरियंस. एज ऑफ नाउ आई एम इन मुंबई, and in Mumbai the cases are reducing as compared to rest of the cities. It started with Mumbai and Maharashtra topping all the cases, but now it is reducing. The curve is reduced, and I am currently staying alone in Mumbai, and there is a marriage. There was a marriage in family, so my parents and everyone, family members, everyone are in Kerala now. So Kerala is the cases are very increasing in Kerala, and lockdown has been implemented for another 1 week, I think so, from starting from tomorrow. So there are corrective measures being taken by the government, Kerala government. And news like one of my colleagues' father died on 1st May. So it was like an attack, heart attack. It was not related to COVID, but he was perfectly fine as such, and he was not having any like this was the first attack, and still he couldn't survive that. And apart from that, a few other news from friends like relatives expired. So it's going on, but I keep myself busy with my work, my startup. I'll work on my startup, then a few other family activities. So I will keep myself busy like that. So ये जो अभी इतना सारा न्यूज आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, टीवी पे तो आ ही रहा है. Sorry to interrupt you, sir. Yes. How was your day? How was my day? How do you My deal day with is it? my day is good. अभी
मेरे फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक, बट these news are disturbing everyone, I guess, in bits and pieces, at least if not the whole day. And जिसकी फैमिली में आई गेस हो जा रहा है, वो लोग तो पूरा घबरा ही जा रहे हैं. एंड आई थिंक ऐसा कुछ, आई मीन इस कोविड का ऐसा पॉपुलैरिटी ऐसा हो गया है कि लोगों को ऑलमोस्ट लग रहा है कि अंत आ ही गया. मतलब पीपल आर pretty much losing hopes altogether at times. I think many people actually, I am not sure कितने परसेंटेज बोल सकते हैं exactly, but I think जो एक साल सब लोग घर पे भी रह गए and not a lot of people went out, colleges, school all closed, so it's getting very depressing at times, I think. So hard to maintain positivity all the time. So I think I agree to most of you that keeping ourselves busy. So once I thought, I'll completely ignore this and not talk about this at all with anyone. But then I thought कि पूरा तरह से भी, I think this thing is at a stage where we cannot fully ignore it. ठीक है, I mean we can say ignorance is bliss, etc. But 24/7 staying ignorant is also not so practical. तो न्यूज तो आते ही रह रहा है. And I'm like, I have like huge network of college, school और startup world, etc. कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे भी कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है न्यूज. मतलब है ना, जितना भी बचा के रखो अपने आप को, व्हाट्सएप तो चेक हो ही जाता है. एंड देयर समवन इज ऑल शेयरिंग कि इस मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया. तो ऐसा कुछ है. सो आई थिंक इट्स गुड टू टॉक अबाउट दिस इन अ वेरी न्यूट्रल वे, क्योंकि कभी कभी मुझे ये लगता है कि मीडिया इज आइदर हाइपिंग थिंग्स और not like talking about some things at all. So anyway, so next question, maybe next something to discuss. How do you see media currently, or like in your view, do you really trust media? I mean, क्या percentage है at which you would want to trust media, let's say in percentage? Chavi, what do you think? Media में जो दिखाता है कितना सच होता है, कितना झूठ होता है? What's your take on that? एक साल से हम लोग देख रहे हैं एटलीस्ट. Hardly 40%. 40% सच, बाकी सब exaggerated और झूठ. Okay. Bhavika, what's your take on the media? I'd say 98% because I only watch Z News and I really like that. Which news? Z News. PNA. Z News is, you're saying 98% correct? I'm not saying it's correct, but I think it's correct because what it 98%. shows is actually what when I do a research on my own, I see like, okay, this is true. Okay, There are okay. reports on this news. Sure. Ayush? But I guess 50-50. Like 50 is the correct path, 50 is the wrong thing which they are saying. Like this is not the truth which is there. So actually they are all managed by the big bulls and all big parties. So the media is like totally into their Sponsored, kind of. Samarpita? Oh, I don't like watching news these days. You don't watch news at all? No. Okay. हरी जी, आपका क्या राय है? So same, news देखना बंद कर दिया है. बंद कर दिया? कब बंद किया? हो गया मीन्स अगर जब से स्टार्ट किया है स्टार्टअप तब से बंद हो गया. Okay, sure. Amritanshu? Sir, I would go with Ayush 50-50 because unless and until you clarify what is being said, you can't believe on it. Yeah, sure. Okay. Okay, Inder has joined. So Inder, you can hear? How are you? Yeah, I can Good. तो अभी क्वेश्चन है कि मीडिया पे कितना भरोसा करना चाहिए, क्या परसेंटेज, कितने प्रतिशत भरोसा करना चाहिए मीडिया पे तुम्हारे हिसाब से अंदर? ओके, मेरे हिसाब से ठीक है, मीडिया हरकत करते रहता है,
60% तो सोच सकते हैं कि हाँ मैटर, मतलब 50% तक कि हाँ मैटर ट्रू है, और बाकी अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ओके ओके, ठीक है। तो हाँ, मैं एक चीज और मीडिया के बारे में ही बोलता हूँ, नॉट जस्ट ऑन कोविड ओनली, जनरल। ठीक है। तो हाँ, मीडिया क्या है, मीडिया एंड सिनेमा आर वेरी सिमिलर in lot of ways, because ओके। cinema also tries to trigger your most emotional point, and news राइट। also kind of triggers your the emotional angle। ठीक है, सिनेमा ओके। इमोशनल कर दिया तो हिट हो गया, न्यूज ने भी हाँ, आपको इमोशनल कर दिया तो न्यूज सही भी बात हिट। है। ठीक है, द हाँ, सेम ओनली किया जाता है। डिफरेंस इन दिस टू इज, सिनेमा में सबसे शुरू में एक डिस्क्लेमर आता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अमृतांशु पता है क्या डिस्क्लेमर आता है यूजुअली सिनेमा के स्टार्टिंग में? कि ये सब This is a काल्पनिक है, वैसा कुछ। ये सब काल्पनिक है। हाँ, ठीक है, ये आ जाता है, न्यूज में वो नहीं आता है। सही है। ठीक है, तो न्यूज इज लाइक द रियल थिंग। because you are allowed to do it on your own, right? जो Whatever भी है, news मतलब comes up, व्हाट आई एम सेइंग कि visualize on your मूवी own. में ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर दे दिया शुरू में कि जो भी देख रहे हैं आप, इसको आप देखिए और भूल जाइए, इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हो सकता है हो, बट वो अपना डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे देते हैं कि डोंट थिंक इट्स रियल। अब आप देखिए, हंसिए, गाइए, रोइए, उसके बाद जो कर रहे हैं कीजिए। हमने अपने तरफ से है ना, सिगरेट के जैसा लिख दिया है कि सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। ठीक है, न्यूज सिनेमा में, सॉरी, न्यूज राइट। में वो वार्निंग नहीं रहता है। ठीक है, तो हाँ न्यूज में क्या हो जाता है, सो लाइक यू नो व्हेन पीपल से 50-60% जो भी, तो दिखाता तो सच ही है, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलत दिखा दिया है। ठीक है, बट इट जस्ट हाँ दैट कि वो जो दिखाते हैं चीजें, दैट प्रोबेबली इज 1% ऑफ द वर्ल्ड और 1% ऑफ इंडिया, और समथिंग लाइक दैट। सो दे आर ओनली कैप्चरिंग एक्सट्रीम्स। ठीक है, हाँ, आइदर वेरी वेरी गुड और वेरी वेरी बैड में भी, बीच का तो कोई रिकवरी न्यूज नहीं दिखा रहा है न्यूज इन जनरल, हाँ, कि इतने लोग रिकवर हो गए, मतलब दे आर नॉट हाईलाइटिंग लेट्स से द रिकवरी स्टोरीज, यू नो, अभी जैसे हमने बात किया कि किसी के घर में रिकवर हो गए, ये है वो है, ये चीज पे ज्यादा बात नहीं होता। क्यों? मैं क्योंकि आपको दिस इज नॉट आपका न्यूज। पॉइंट कहना चाहूंगा सर, मैं आपका हाँ बोलो पॉइंट बोलो। कहना चाहूंगा। मतलब वो क्या करते हैं ना, वो कहते हैं कि हर न्यूज बड़ा न्यूज है, उसको इमोशनली ऐसे कनेक्ट करते हैं किसी भी एंगल में, मतलब सब कुछ बड़ा है, खतरनाक वाला, डेंजरस, वैसा करते रहता है। न्यूज है, नॉर्मली दिखा दो, हाँ भाई ये न्यूज है, बाकी जो लोगों को एक्शन लेना है वो लेंगे, करते तो यही काम है। नॉर्मल इसीलिए नहीं दिखाते ना कि नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं बनेगा सिनेमा जैसा। सही है। सिनेमा अगर नॉर्मल दिखाए, चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, द एंड, हाँ, उसको कनेक्ट कहीं और कर देते हैं, होता कुछ और है, उसको कनेक्ट कहीं और करवाने का कोशिश करते हैं। जो भी है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इट्स काइंड ऑफ ट्विस्टिंग फैक्ट्स एट टाइम्स। सो दिस इज वेयर यू नो न्यूज कैन बी क्वाइट डेंजरस। मैं तो अपनी बात करूँ तो बचपन से ही छोड़ दिया था देखना, एंड आई जस्ट feel my life has been happier because of this. I think Samarpita also said the same, हाँ, कि she doesn't watch news, follow news, etc. बट अब क्या हो गया, एक प्रॉब्लम ये आ गया ना कि सोशल मीडिया इज ऑल्सो फ्लडेड विथ न्यूज, एंड आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स आर ऑल्सो फ्लडेड विथ न्यूज। अब इसको ब्लॉक करने का कोई तरीका एक ही है, यू स्विच ऑफ योर स्मार्टफोन, और वो अब हम लोग यू नो वी आर बियॉन्ड रिपेयर इन दैट रेस्पेक्ट। सो अब उतना साइड इफेक्ट लेना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते उसमें अभी, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं प्रोबेबली। तो राइट। इसके बारे में Completely क्या agree बोलना with चाहिए? this यस point. भाविका। Like when I was a kid, let's say I'm a little grown up now, but when I was a kid, I did not watch news at all. Like if you turn it on, I would just run away. Like on every platform, maybe on Instagram, Twitter, I did not even read the newspaper. People used to shout at me all the time to do it. And if I compare it right now, I'll definitely say that I was happier back then because I did not have 100 million things to think about, trivial things to think about that maybe do not even concern me in the slightest. श्योर, तो अ गुड एक्सपीरियंस टू शेयर। ठीक है, एक जमाने में न्यूज नहीं देखने वाला इंसान अब देख लिया न्यूज, एंड दे आर गेटिंग, देयर डिप्रेशन कोशेंट इज इंक्रीजिंग। छवि, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई मीन, न्यूज ना देखने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं क्या तुम्हारे हिसाब से?
सर आई गेस वो रियलिटी से दूर भागता है, मतलब दूर भागते हैं। न्यूज थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ओके ठीक है। आयुष? Yes, sir. At least you should know like what is. If you have TV नहीं देखना चाहते, you better you read a newspaper. वो एक way of like उसमें you will not see a video or stuff something. So at least वो ऊपर का headline पता हो. But I guess आजकल what is happening, social media से ही हमें पूरा मिल जा रहा है. Instagram पे आप खोलो 100 reels आएगा जिसमें कि पूरा कोरोना वायरस explained है. तो एक way हो गया है like अब जबरदस्ती न्यूज दिखाया जा रहा है, अब बच ही नहीं सकते उससे। जबरदस्ती अब उसके लिए अलग से पेज क्रिएट कर रहे हैं कि वी विल लाइक फॉलोइंग न्यूज़ एंड वी विल बी क्रिएटिंग दिस स्टफ लाइक तो अभी ये चेंज हो। हरी जी आपका क्या राय है तो इस पे? कैसे भी मतलब न्यूज से बचना बहुत हार्ड हो गया है। हाँ एग्जैक्टली खास करके कोविड का न्यूज तो पहुंच ही जाएगा कैसे कैसे, कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगा, कबूतर लेके आ जाएगा। कोई नहीं लाया तो अगर कुछ नहीं लाया तो खुद ही लेके आ जाएगा। हम खुद ही एक्सपेरिमेंट बन जाएंगे। नहीं, मैं अवॉइड न्यूज, कोविड रिलेटेड न्यूज ही अवॉइड करता हूँ, नेगेटिव न्यूज। बाकी जो नॉर्मल करंट अफेयर्स है या जो भी है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो सब आई विल वॉच दैट अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो। श्योर। अच्छा एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आई थिंक वी विल रैप अप इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। एक बहुत सारा डोनेशन ड्राइव्स चल रहा है अभी, यू नो विल सी कि ये वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी डोनेशन ड्राइव्स स्टार्ट किए हुए हैं and you might be even getting that kind of message कि please donate, please donate, please donate. So according to you, I mean, do you believe in this donation drives? मतलब तुम्हें लगता है कि donation drives बहुत genuine है, जो पैसा दोगे वो यूज होगा या बीच में कुछ गायब हो जाएगा? I mean, Ayush, what do you think? सर इफ वी थिंक अकॉर्डिंग टू द लाइक इंडियन पॉलिटिक्स सारे के माइंड में वही जाएगा कि वो गायब होने वाला है ये बीच से. बट देर आर ऑर्गेनाइजेशन जो सच में वर्क करता है. तो बट देर इज नॉट अ वे कि आप उसको ढूंढ पाओगे. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ. ह्यूमैनिटी के नाम पे आप थोड़ा डोनेट कर सकते हो बट आई डोंट थिंक लाइक वो आप बेटर होगा डायरेक्टली आप अपने एरिया में किसी कोविड पेशेंट को जान पहचान वाले को दे दो rather than किसी अनजान को दे दो. यस यस. Okay. Bhavika, what do you think about this I completely donation? agree, Zaya. Like if I don't really know. There are big names, there are big companies, but what's the credibility? Most of them don't have a complete transparency. Only some have, but I think it's better to give it to somebody whom you personally know and you know that they need it genuinely, and not even 1% of your money will go to waste. Sure. I mean, अगर अननोन को दिया तो देयर इज अ 50-50 चांस यूज होगा ठीक से या नहीं होगा विथ सम ग्रे एरिया. बट अगर नोन को दिया तो एटलीस्ट है कि हाँ इसको दिया, जो भी किया वी नो दैट पर्सन. तो उड़ा भी दिया या आई डोंट नो, आई मीन वहां नहीं खर्च करे कहीं और भी किया, फिर भी उसका वहां तो कहीं ना कहीं खर्च हुआ, क्योंकि पैसे पे तो नाम लिखा नहीं रहता है कि 1000 रुपए मिले तो इसको मैंने इलाज में खर्च किया या आइसक्रीम खाने में खर्च किया. आइसक्रीम खाने में भी खर्च किया तो इलाज में भी खर्च किया कहीं और. तो those things are always there. Chavi, what do you think? Yes, Bhavika, you want to add something? They get a bill of like let's say 500, but they make it they show you that it's like 800 or 1000 rupees. So credibility comes down at there for that point as well. Correct. Chavi? Yes, I completely agree with both of them. Like कि अगर आप मतलब डोनेट करते हो उसमें बहुत मिडिल मैन आ जाते हैं. आई डोंट इवन नो कि वो जो आप डोनेट कर रहे हो वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं, कि किसी का फायदा हो भी रहा है या नहीं. बट इफ यू डायरेक्टली गिव इट टू सम पीपल नियर योर लोकेलिटी दैट विल हेल्प. Sure. Samarpita? Yes, sir, I agree with all of them. We should directly give it to the person whom we know rather than donating. Okay, sure. Hari ji, आपका क्या राय है? Yes, I also similar ही है मेरा opinion कि rather than donating to some fundraiser events, आप खुद event में volunteer कर सकते हैं better than giving donations. You volunteer such events
और अगर आप वॉलंटियर नहीं करना चाहते या नई सिचुएशन में ऐसे है कि वॉलंटियर करे, सो बेटर यू कैन हेल्प योर नियर बाय पीपल हु आर इन नीड। जो नीडी लोग हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हैं उनको हेल्प कीजिए। सो दिस थिंग आई ऑल्सो एग्री कि आजकल जो NGOs एंड फंडरेजिंग्स है, there is no transparency in that. So if you are donating some amount of money, you never know where that money has gone exactly, whether it's really for COVID or related, or whether it's really for the same purpose or not. So that is the thing. So Sure. I also don't think like NGOs are suitable for. इंदर, तुम्हारा क्या राय है इस पे? मेरा ऐसा है सर, हरी सर से एग्री करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद जाके डोनेट करो, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको डोनेट करना चाहिए। पहला है तो डोनेटिंग वगैरह अपने शुरू से ही करो, ऐसा नहीं है कि कोविड आ गया तो ही करना है, जब भी मौका मिले कर सकते हैं अगर किसी को हेल्प चाहिए तो। और दूसरा ये कि अगर आपको पता भी है कि ये बंदा फ्रॉड है, ये पैसा खुद ये कर लेगा, और कुछ लोग आपको देख रहे हैं कि आप डोनेट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों के अंदर जो फेथ कहीं ना कहीं खत्म हो गया, कम से कम वो तो आएगा कि हाँ यार भलाई करे लोग, भलाई करना चाहिए। तो उस हिसाब तो से कभी क्वेश्चन कभी ये कर था देना कि जान पहचान में करना चाहिए या जो ड्राइव हो रहा है उस पे करना चाहिए? चाहिए। जान पहचान में। जान पहचान ज्यादा प्रेफरेबल है। राइट राइट। श्योर। एक और चीज, लास्ट पॉइंट टू डिस्कस, सर। बहुत सारा डोनेशन हो रहा है आई गेस, और बहुत सारे लोग उस डोनेशन को पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं, यू नो दैट आई डोनेटेड दिस मच, आई डोनेटेड दिस मच, ये है वो है। मतलब जितना डोनेट नहीं किया उससे ज्यादा हल्ला किया, उस डोनेशन का भी न्यूज बना बना के पता नहीं कितना हल्ला किया। सो व्हाट डू यू थिंक इंदर, तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये डोनेशन जो देते हैं लोग, उसको हल्ला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से हल्ला करना चाहिए, बढ़ चढ़ के ढोल पीटना चाहिए कि मैंने डोनेशन किया, बट जिसको डोनेट कर रहे हो उसको हाइड करके रखो कि मैंने इसको दिया है, बट आप खुद पब्लिसिटी, अपना पब्लिसिटी करो जी भर के कि भाई मैंने डोनेट किया। हालांकि मैं प्रीफर पर्सनल नहीं करता, बट आप ये करते भी हो तो गलत नहीं है। कुछ लोगों को तो इससे सीखने को मिलेगा, देखेंगे कि हाँ भाई भलाई वलाई करना चाहिए, कुछ लेकिन लोग उसका मजाक मत इन्फ्लुएंस उड़ाओ होंगे, जिसको आपने पर्सनली डोनेट किया है। हाँ इन्फ्लुएंस हाँ होंगे, मतलब देखेंगे हाँ यार हाँ इसने किया तो हाँ मैं भी करता हूँ, हाँ। अब ऐसे मैं ऐसा ऐसे क्यों बोल कुछ। रहा हूँ पता है सर, क्योंकि मतलब क्या हुआ ना, अभी लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो बेस बना है ना ह्यूमैनिटी का, वो बेस ही मतलब कि कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका है। हम लोग क्या करते थे आज के मतलब 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, दूध के लिए बकरी को बांध लिया, वजन कहीं ले, ट्रांसपोर्ट के लिए गधे को ले लिया, कहीं जाना है तो घोड़े को ले लिया, कोई मैसेज पहुंचाना है तो कबूतर को अपने हिसाब से। मतलब हम क्या करते हैं ना, अपना पावर निर्जीवों पर दिखाते, मतलब कि अपने से कमजोर पे दिखाते हैं। तो वही सेम चीज अपने अंदर भी आ गई है, तो हमारे जो सीनियर है वो हमें हम पे दिखाते हैं, हमारे जो बॉस है हमें दबा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं काट के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं खाना चाहिए, खाओ कोई बात नहीं है, मैं भी खाता हूँ। तो ये चीज जो है ना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी, इन सब चीजों को तो इम्पेक्ट कर ही रही है। आप मतलब चाहते हो कि आप मतलब कि इंसानियत भी रखो, और मतलब इंसानियत भी रख चाहने हैं, और किसी को मार के भी खाओगे, तो तुम ये तो ये बोल रहे दोनों हो चीज मतलब कि कि पॉसिबल जो नहीं लोग है। जानवरों को मार के खाते हैं, अगर उनको कोई मार रहा है तो कोई पाप नहीं हो रहा है, ये पूरा पाप इन साइकिल द सेंस कंप्लीट हो रहा है। मतलब कि ये है कि आपको सक्सेसफुल भी बनना है और आपको हेल्दी भी रहना है, ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो हम्म, इंसानियत, ह्यूमैनिटी रहे, तो बाकी बाकी चीजों का भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और नहीं तो आप खा रहे हो तो कम से कम इंसानियत एक्सपेक्ट मत करो कि आपके साथ अच्छा हो, ये करेक्ट। एक्सपेक्ट नहीं ठीक है, मत ये करो और अच्छा डिबेटेबल करते रहो। टॉपिक है हाँ कि हाँ अगर आप खुद नॉनवेज खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने हाँ अपने आप को सुपीरियर डिक्लेयर कर दिया है कि बाकी हाँ, सारे वही कि जानवर का ह्यूमैनिटी, कोई अस्तित्व नहीं है, हम इंसान मेरा ऊपर है। सारा हाँ अस्तित्व है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं मार सकता, बिकॉज आई एम प्रोटेक्टेड बाय लॉ। बट हाँ देन द लॉ इज नॉट वर्किंग विथ कोविड, सो हाँ हाँ, कोविड को तो सजा दे नहीं वही पाएंगे। है। तो काइंड सही ऑफ है सही है। ठीक है, आई थिंक ये एक आई थिंक सोचने का भी तरीका है। तो हाँ एनीवे, हाँ ओके, अमितांशु, व्हाट्स योर टेक ऑन ये डोनेशन का पब्लिसिटी वाइज? का publicity करना चाहिए, because the point is, let's leave aside all the fact of whether the money is going to the correct place, whether people are getting affected and really positively getting impacted by it. That's a different thing. This is all about saving lives. If you have the correct intention and you have money in hand,
with time. और क्या चाहिए? कर दो यार कुछ, अभी तो करने का टाइम। कर दो तो ठीक है, करके हल्ला करो ना करो वो Yeah, you क्वेश्चन can था। do it because हल्ला करने का ऐसे मतलब the point is if you do publicity regarding how much you have donated and to what will help others take a pathway as you have done, and they may also contribute even 100 rupees. So it will inspire people. Yeah, that's a source of inspiration. Because when वो जो Pat Cummins अभी दिया $55,000, that inspired other cricketers and further Indian cricketers to contribute to the PM Cares Fund, right? Okay. Bhavika, what do you think about this? I think completely करना चाहिए. It's your hard earned money. आपने उसे एक अच्छे cause में दिया तो दो चार लोग और inspiration ले रहे तो क्या ही खराब है उसमें. And ठीक है, मतलब क्वेश्चन है कि करना चाहिए कि नहीं, मतलब लोग तुम्हें लगता है इंस्पायर करने के लिए करते हैं या उनका कुछ और इंटेंशन भी होता है? रादर इंटेंशन रहे, वो कर रहे हैं, उन्होंने किया, बताने में क्या जाता है. और अब अगर आपको अपने आप पे इतना अच्छा खासा क्रश है, आप इतना बोल सकते हो, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ऑन फ्लिप साइड इससे एक फिर अकाउंटेबिलिटी भी आ जाता है कि हाँ इतने लोगों ने इस फाउंडेशन को या फिर इस एनजीओ को दिया. तो उस एनजीओ के ऊपर तलवार लटक जाता है कि अब तुमने क्या किया, बताओ ठीक से. अगर तुम्हारे पास से एक पैसा भी निकला तो अब तुम गए कहाँ गए? Correct. A tangent question. Sure. Is that a guitar in your background? It's a guitar, yes. So which model may I ask? I don't know actually, it's not mine. Brothers. Samarpita, what's your take? Okay, I think let's finish in 5 minutes. बताओ. I think, I mean, whatever others are saying is correct. Like people will get inspired and the NGO will be accountable and all. But I personally think I won't tell it to anyone. I don't know. Like I don't like to tell other people, or in social media I would brag. I would tell my close people, but not on social media. Okay. Chavi? I have the same opinion as Samarpita. Like मतलब मैंने भी लाइक कई बार डोनेशन करी है एंड इट्स लाइक कि पता नहीं, मतलब आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स को भी देखती हूँ लाइक कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए या कुछ भी, कि फिर वो अंदर से अपना एहसान जताना नहीं चाहिए इतना, वो हो जाता है, पता नहीं क्यों. पाप सॉरी पुण्य कम हो जाता है, नलिफाई हो जाता है बता के. अच्छा आयुष, तुम्हारा हो गया था क्या? तुमने बोल दिया था? नहीं, हाँ बताओ. सो इस पर व्यूज वो ठीक है, सबके ठीक है, लाइक मतलब हम लोग उसको कर सकते हैं, सबको पता चलेगा, बट वी कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे, ना कि ये बताकर कि हम भी किए. ज्यादा आप क्या करो, आप उसके वो फंड के बारे में बता दो सबको कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ना कि ये बताओ कि मैं किया हूँ तो आप भी करो. सो एटलीस्ट सबको उस वे से पता चल जाएगा. अगर आपको खुद अपना हाइड करना है सबसे कि नहीं हम, फिर नहीं तो सारे लोग आजकल ये सोसाइटी में कि अरे यार ये शोइंग ऑफ, ही अपना फंड दिया है, ये कर रहा है, पैसे का घमंड दिखा रहा है. तो सोसाइटी इज लाइक दिस. तो बेटर होगा कि आप करो अपने अंदर से जितना कर सकते हो, इट्स ऑल गुड, बट आप उसका क्या करो, प्रमोशन कर दो, आप दिखा दो, बता दो सबको कि हाँ ऐसा भी हो रहा है, यू कैन ऑल्सो डोनेट देयर. तो ये है. करेक्ट. आई थिंक इसमें अच्छा हरी जी आपका, आपने नहीं बोला ना शायद. यस, मैं एग्री करता हूँ कि it is said कि if you are helping someone, he must not know like you have helped him. आप just enjoy कीजिए and you see how his life has changed because of you. So मुझे तो ऐसा ही लगता है कि brag करने की जरूरत नहीं है. It's okay, like you can publish it if you want, but thing is negatively उसको काफी लिया जाता है. So many people have different opinions. So I don't think someone will be really inspired or inspired to help by seeing such post or anything. हाँ, but ठीक है, there will be a thing that I'm doing something, that satisfaction. So I think the personal satisfaction you will get only when you see in actual like what changes you have brought to that person,
or to that in that field, or maybe if you are working for a child like education or child against a child labor. So whatever you do, that should be a self satisfaction, not for just for bragging that I have done this. So it's not required actually. Yeah. आई थिंक मैं अपना बताता हूँ. जैसा डोनेशन दो तरह से होता है. जैसे जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि टू एन इंस्टीट्यूशन, टू एन इंडिविजुअल, राइट? सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर सीइंग इन द न्यूज या सोशल मीडिया, जो बहुत सारा सर्टिफिकेट्स है या जो भी है, दोज आर मोस्टली टू एन इंस्टीट्यूशन. ठीक है कि मैंने इस इंस्टीट्यूशन को इतने पैसे दिए. इंडिविजुअली कोई किसी का अगर हेल्प कर रहा है, usually that is not posted, that stays anonymous at times. So I guess different people might have different intentions running in their mind about donating. कुछ ऐसा सोचते होंगे कि इस मौके का फायदा उठाया जाए दो तरीके से. एक, अपना थोड़ा पब्लिसिटी भी किया जाए, थोड़ा सा दूसरे को इन्फ्लुएंस भी किया जाए, और तीसरा अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ डोनेट भी किया जाए. सो दे हैव लाइक अ 3-fold एजेंडा काइंड ऑफ, और 4-fold एजेंडा, कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा काम भी हो जाएगा, और थोड़ा सा मैं भी फेमस हो जाऊंगा एज अ मसीहा या समथिंग. सो आई गेस जितने भी लोग इंस्टीट्यूशनल डोनेशन करते हैं, वो ये 2-3 चीजों के बीच ही दे विल हैव द इंटेंशन रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज 3 कंपार्टमेंट्स. लेट्स से किसी का एक ज्यादा होगा, किसी का एक कम होगा, एटसेट्रा. जो एनोनिमस कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको इन्फ्लुएंस करने का या अपना पब्लिसिटी, सेल्फ पब्लिसिटी करने का उतना इंटरेस्ट नहीं है. उनका सिर्फ हेल्प करने का इंटरेस्ट है. जो लोग उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट टू इन्फ्लुएंस अदर्स एज वेल एज क्रिएट देयर ओन इन्फ्लुएंशियल image or helping image ki hai na, I'm like a helpful person, which as a, let's say, as a company owner or some companies who do all this charity will help in their employer branding or even personal branding, ki I am a person who helps, or we as a company are taking care of India as such, and we as a country are taking care of India. So I guess ये कुछ reasons हैं, and probably it's a personal choice. I mean, we should not probably say कि ये सही है, ये गलत है. अपने को मैं तो इंडिविजुअल लेवल पे यही मानता हूँ. एक मिनट, कि it should feel right from within. If it feels right from within to do one path, do it, or just avoid. So with this note, we'll end the meeting. ठीक है. So hope everyone is safe and sound for the coming days. ठीक है, चलो. Good night everyone. Good night. Thank you everyone. Good night. Good night, everyone.